opportunity, and I fell in love with, you know, the film in totality. Puneet ने मुझे one liner दिया right after Paglet. I think within few months she called me and she was like, मेरे पास ना एक one liner है, मैं तेरे को सुनाना चाहती हूँ, हम zoom call करते हैं. I'm very happy. I was like, Paglet कितनी मजेदार थी, मैं ये तो सुनने वाली हूँ. And we got on a zoom call. She gave me the one liner and I fell in love with it. And then I met Yasho और उन्होंने मुझे story सुनाई. So in totality, so I was really happy to be playing this character, and also it was a challenge in itself क्योंकि मेरी कोई interaction पुलिस वालों से आज तक हुई नहीं है. आप मिली भी नहीं? हाँ. आप मिली भी नहीं पुलिस वालों से? नहीं, पर मैं prep के दौरान मिली, and I got to, you know, experience कि हम जो uniform देखते हैं उससे थोड़ा डर भी लगता है, but I also saw कि they are beyond that. Their life is like, I remember हम लोग prep के लिए ग्वालियर में थे और हमें एक पुलिस ऑफिसर के साथ यशो और मुझे मौका मिला to be in her office in one corner and see how she works. तो वो केसेस भी सॉल्व कर रही थी और साथ साथ में घर के भी केसेस सॉल्व कर रही थी कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उनका कॉल आ रहा है कि मेरे को घर भी जाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, और बहुत छोटा बच्चा था उनका. To see that, to see the reality, to see the real side of a cop, मुझे लगता है हमने बॉलीवुड में वो एक्सपीरियंस और वो चीज़, वो साइड दिखाया नहीं है. हम दिखाते हैं कि वो मारधाड़ हो रही है और वो जो कार के सामने बैठकर आ गए हैं, वैसा वैसा भी देखा है. But it's a very real story, and I think I'm so lucky to be a part of it and to play a character like Mahima. Thank you so much, and we would all love to see you as Mahima. And I hope a few more journalists want to ask some questions to you. Hello, hi, this is Aina from Instant Bollywood. Congratulations, the trailer looks amazing. My question is to Achin sir and Vineet ma'am. You know, congratulations for the Oscars. I'm so happy and proud. My question is, your next venture is Kathal. So, do you feel like the expectations are way higher now for anything that you guys bring to us? Oh, we are ready for the expectations. We are ready for the Oscar. Another Actually, ये बहुत ही special, बहुत ही प्यारी film है. But to be honest, you know, all we can do is wake up every morning and be honest to the story that we are telling. There, जितने भी awards और rewards होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते. You know, every film has its own journey. So you never make a content for an award. You just make a piece of cinema because you love the story. And हम लोग long format में काम करते हैं, तो जो हम जितने हमें साल लगते हैं एक कहानी बोलने में, you have to fall in love with it every day. You know, so 3-4 साल की मोहब्बत है ये, जो आज आप देख रहे हो, शायद आप एक 2 घंटे की पिक्चर देखेंगे, पर हमारे 3-4 साल लगे. You know, so the idea is that whatever piece of cinema comes out there, we hope you enjoy it, and we don't take your time for granted. You know, we make sure that it is worth the time the audiences give us, and the team that has worked on it extensively. So उस प्रकार से सारी expectations के लिए ready हैं, and उससे ज़्यादा हम pressure लेते नहीं हैं, because हमें पता है कि हमने अपनी सच्चाई में और पूरी मेहनत की. You know, so we've done everything that we could, and now it's over to the audience. We're looking forward. Thank you. Please watch. Hello. Hi, Usha. On your left, Usha. Hi, Usha here from Austin TV. My question is to Anant. Hi. So, you know, what was that one thing that clicked while reading the script that you said yes to the film? And also, could you just share how was your experience working with the entire cast? So I'll tell you that one thing that you're asking, and the first thing that happened to me. When I came to Bombay, probably in my first year, मैं अपनी एक एक्टर दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैं एक कैफे में था. That's when Puneet entered the cafe. I don't know whether you remember this. Of course not. And yeah, I'm talking about like 4 years ago. And my friend was like, she met her and she was like very nice to her and everything was great. And I was like, who is she? And she said, you do not know her? And I said, no. And she said, Anant, you better put your socks. You need to know who, people that you need to work with, who are good people working in the industry. She's Puneet Monga. I'm like, oh, okay, nice. So, and then I'm now fast forwarding it to like 4 years, or probably a year ago. That's when I got a call saying that Sikhia is making this film, and I knew that Puneet is a part of that. And हाँ, तो मतलब वो मैं तुरंत 4 साल पहले गया और मेरा ऐसा था यार
वो probably जो thought था, एक seed था मेरे दिमाग में to work, to be able to work with Vineet. Finally, it's taken that little baby sprout. So yeah, that was the first idea to say yes. And later when I got to know कि अच्छा ये कहानी है, and Yasho is directing it. धीरे-धीरे फिर सबसे मिलना शुरू हुआ. Then I got to know Sanya. So everything was like, oh my god, oh really? Oh, this is happening? Oh, they are involved? So धीरे-धीरे was, wow factor बढ़ता गया. And I felt like I'm in this, as I earlier said, that it's probably a dream team for me because मैं एक बहुत छोटे, मैं नैनीताल से आया हूँ. And with a very cliche dream of like, मुझे फिल्मों में काम करना है. So when that happens, this is my first film. And I started my web journey with Ekta ma'am actually. So my first web show was for her channel. So yeah, so combining, I think वो सब ऐसा लगा कि it was this manifestation of all my wishes. So yeah, उसमें कुछ बहुत सोचना नहीं था कि अरे क्यों मैं हाँ कर रहा हूँ उसके लिए. Congratulations to you and wish you luck. My next question is for Ruchika. Congratulations to you too. The first quarter for your films have done really well. Looking forward for the next coming year. So what are the kind of plans you have made? What kind of benchmark are you planning to set with your upcoming films? Firstly, then we are very excited for the fact that you're also excited. But yeah, we had a pretty incredible year with both Mission Majnoon Chor and in fact the last year with Yadav, Gangubai, Darlings, Monica My Darling. So I'm just name dropping because why shouldn't I? But after the phenomenal success, I think it just further entrenches the fact that India has really got a huge appetite for films, and each of our titles has been as diverse and as different from the other. And I think if you're in a happy mood and you want to watch a rom-com, you've got to turn Netflix on. If you're in a mood to really watch a spy thriller, basically we program for every mood. And I'm hoping that with the titles that are coming this year, like Vishal Bharadwaj's Khufiya, there's The Archies with Zoya Akhtar, there's Chakda Express with Anushka, Kareena and Sujoy's thriller. So each one is so different from the other. And what also further puts our belief in the fact that our consumers are loving what we watch is, as a Netflix stat, India has the highest percentage of film viewing in the world. So while we're taking everyone's films out to the world, India is really consuming all of this, and we're hoping that the appetite for films never ends and that we can keep feeding the audiences with better, bigger, more entertaining films, just like Kathal, which is not just entertaining, but I think it really leaves a lasting impression once you watch it. Absolutely, looking forward to it. And If you're in the mood of baby elephants, then there is Elephant Whisperers also. I started, I said, koi film hai aur Oscar, I believe it made a lot of noise at the Oscars. I started by saying that because everyone has got a chance to sit in a dance with Ekta Kapoor and some Oscar winners and some prolific actors. But we as Netflix are just so excited to collaborate with this dream team here. Thank you. Very good afternoon, Guneet, Ekta, Ruchika. My name is Monty. I'm from ITV Gold, New York, so flew down all the way to be a part of this great press conference. First of all, a big round of applause for you, for Elephant Whisperers. You made a brilliant mark in the United States and globally, raised the bar for Indian filmmaking. This frame right here of Guneet, Ekta, and Ruchika, I just have one thing to say. The great Julius Caesar said, Vinny, Vinny, Vissy. He came, he saw, he conquered. Now it's she came, she saw, she conquered. So basically, that's just what I have to say for you three. You guys are the future of Indian cinema and global cinema. And this is just the beginning. Beautiful. Coming back to my question, because I'm so overwhelmed seeing such great people on this podium, not ignoring you guys. But Ekta and Guneet, when you first heard about this script, what was going on in your mind? Did you guys speak to each other? I want to know your individual perspectives. You guys have each brilliant creative quotients. What was your take, Guneet, and what was your take, Ekta? So, I actually, I think this happened post Period End of Sentence, when Period End of Sentence, which was also at Netflix, that I executive produced and Sikha produced, won the Oscar in 2019. Post that, everybody asked me, अब तो life बदल गई, but वापस आकर क्या करें ना? I think that's the time I got a call from Ekta. I had just come back, and she said, whatever you want to do in life, I'm backing it.
just go dream whatever you want to do. And I think it's been so many years, at every given level, she stayed true to that statement. In every meeting, in every conversation, that sentence has deepened between us. You know, it's just becoming more and more real. So we went on a journey for Paglet first, and Ruchika was, at that time was at Balaji. So it was Ruchika, me, and Ekta, and we had a really successful run at with Paglet, with Sanya, and with Netflix. And since then, I think we are doubling down. So Kathal is again another production of ours in the same spirit. When I heard the script, I was totally mind blown by Ashok ji and Yasho, and he बहुत ही पहले तो एक छोटा सा कहानी था, उसके बाद रिसर्च कर आए, and जिस तरह से नरेट की थी ना, वो 2 घंटे मुझे आज तक याद है, it was like a stand-up comedy act in the office. कि इन्होंने अपनी ना रिसर्च नरेट किए हम, तो अभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी कि हमें कैसे कैसे लोग मिले, क्या था. So I was like, this is so mesmerizing. I said, सबको पेपर में कैसे लिखोगे? So then of course they went and wrote the script, and we narrated the script then at Balaji, which is our studio that funded the project. And then Netflix came on board, which is the studio that is our distributor and taking it to the world. So that is how the association went on, and in this association there is many more happening. So Ekta is staying true to the word that she said to me, and I enjoy that privilege of faith of Balaji and the confidence, and I hope with every project at Sikha we live up to it. Excellent. And Ekta, what about you? So this is my 29th year at work, and I complete 30 years next year. I think there should be a round of applause, guys. And one thing I've learned in 29 years is that once you've been enabled, you have to become an enabler. And you have to use the resources that have been given to you, or you have created, to create many more young producers. And in Guneet, there is everything to become the next force to reckon with. And she's doing the same. So from being a young producer who started on her own, now she's giving younger talent a chance. So this is just a cycle, and you have to pass on the baton when it is necessary, pass on the stage, and be ready to cheer for others. And this producer today who's won the Oscar is a clear example of what a woman can do when she decides to make entertainment, content, or take the matter in her own hands. And thank you, Netflix, and this is a meta moment, my young talent Ruchika, to be actually here doing this. So it's fantastic to see an Oscar winner and a director at Netflix, both women who I totally believe in. Both of us have been empowered in a deep way. Yeah, I was just going to say it. And like she walks the talk. She's really empowered us, and that's why we're all here and being able to really have the dreams to tell these stories. Now we can go to. Hi, Akriti here. Yes. Hi, Akriti. Hi. So my question is for Yashovardhan and Ashok sir. Like, apart from being a partisan duo on this project, you guys have worked as writer and director. So how was this collaboration, this creative collaboration between you two like? बहुत झगड़े होते हैं. Not easy. So no, jokes apart, like a lot of the way I think about cinema, जो मैं काम करता हूँ, it has been molded by my father, and it's a privilege that I have, and I acknowledge absolutely. But उस privilege को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, and where I take it and add my own voice to it, I think that really matters. वही हमारी जद्दोजहद होती है. इनका अशोक जी का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो पकड़ है, ज़मीनी पकड़ है, लोगों को देखने का नज़रिया है, आम इंसान को, आम आदमी को देखने का नज़रिया है, बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है. उसमें मैं अपना विजन ऐड करता हूँ, तो वो उसका एक बहुत बेहतरीन अमैलगमेशन होता है. वही आप देखेंगे कथल में. Ashok sir, would you like to add? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे फिल्म समीक्षक जो हैं देश के, वो एक मांग करते हैं हमेशा कि ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो पारिवारिक हो.
ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसमें इंटरटेनमेंट हो, ऐसी फिल्म हो जो देश की हो। तो ये हम लोगों को दोनों हम लोग चाहते थे कि ऐसी फिल्म बनाएं, क्योंकि ये वर्षों से सभी फिल्म समीक्षक मांग करते हैं, कहते हैं इसमें इंटरटेनमेंट है मगर कोई मैसेज नहीं है, इसमें देश नहीं दिखता, इसमें विदेश ज़्यादा दिखता है। तो ये हमारी कोशिश थी, हमने सोचा कि ऐसी फिल्म बनाएं। और मैंने पहले भी जो फिल्में लिखी है सब देश की फिल्में हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारी जो बोलियां हैं देश की वो बहुत पावरफुल है, हिंदी से कहीं ज़्यादा। इसलिए जो भी फिल्में बनती, गंगा जमुना, इवन दंगल, अगर दंगल हिंदी में बनती तो कितनी बोर लगती, वो हरियाणवी में बनी। तो हम लोग बोलियों पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने देश की, जिसमें बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है, राजस्थानी है। तो इस तरह से हम लोग मिल के काम करते रहे और फॉर्चुनेटली हमारी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। कभी कभी झगड़ा होता है हमारा किसी एक डायलॉग पे या एक लाइन पे या एक सीन पे, पर वो सुलझ जाता है किसी तरह से। I just want to add here and say that we have worked a lot with a lot of first-time writers, directors for long format, and I'm saying this in advance, but I'm saying that Yashovardhan is a talent to look out for. It has just been phenomenal in every which way, collaborating with him, learning from Ashok ji, and ये जो हमारे देश की पिक्चर है, I just hope it resonates with everybody also, but definitely look out for Yashovardhan Mishra. Hello. Yeah, hi. To your left. Yeah, hi. My question is for Rajpal Yadav sir. You are really well known for your comedic timing, and a lot of your characters are popular with the younger audiences right now. So, is it a conscious choice to pick roles that might have a lasting impact with audiences? देखिए ब्रदर, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशवरा भी होता है। और मेरा शौक या मेरी हॉबी समझिए, मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दें कहीं पे। हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हम सब। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता, क्योंकि बाकी मुझे कुछ आते नहीं है। आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से कहीं न कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यार, आप एक मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविजन या फिल्म में जो भी किया, 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ। और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि और मेट्रो सिटीज को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए, चलो उसमें शाहजहांपुर, हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए, उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है जिंदगी, चाहे वो मीडिया पर्सन की हो, एक पत्रकार की हो, जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी है उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है, और उनके लिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की जिंदगी है। तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है, क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे, रील कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए। बहुत कष्ट है और ये सच बात है। और उसके माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूँ, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है उसकी तरफ भी इशारा करता है।
और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। एक तो वो मनप्रीत का फोन आया कि और उसको मैं इरफान भाई के जमाने से जानता हूँ, तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटल मतलब सटल, तो बोले नहीं कटहल। कटहल ओके, कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है, इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले कि जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा दो चार सीन में न्यूज पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूँ, और आगे भी तलाश में हूँ कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे दो चार पत्रकार देखे हैं जिंदगी में जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए तो शायद वो दुनिया के लिए बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है ना इतना कभी इससे मीटिंग जूम मीटिंग, कभी मेरी कार रुकवाई जा रही, तो मैं बोला कि ये बना क्या है। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। फिर मुझे बहुत दिनों से ऑफिस में किसी के नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा, 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन लेते। फिर गया तो वहां पे 15-20 नारी शक्तियां, मतलब कोई ये घूम रहा है कोई ये। तो मैंने कहा ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई और फिर इसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ तो सच में मैंने कहा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी और जिस तरीके से पूरी टीम ने, और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ या पुनीत को और स्पेशली नेटफ्लिक्स को कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में, और मैंने बहुत इंजॉय किया। आई बिकम लाइक स्टूडेंट, क्योंकि कभी होता है ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही, जिस तरीके से किया वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत राजपाल सर के बारे में एक छोटा सा मैं बात करूंगा। ये जो इन्होंने विग पहनी है ये बहुत, हमने 42 डिग्री गर्मी में शूट की थी ये फिल्म, और ये सड़क पे हम शूट कर रहे थे और बहुत तेज गर्मी थी और उनकी विग से मतलब पसीना निकलता था, मतलब बहुत सारा ढेर सारा, बहुत गर्मी थी। तो मैंने शॉट लग रहा था और टाइम लग रहा था शॉट में। मैंने राजपाल सर बोला सर आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए, अभी टाइम लग रहा है। तो राजपाल सर ने मुझे बोला कि देखो ये 200 लोगों का क्रू मुझे अच्छा दिखाने के लिए काम में लगा है, मेहनत में लगा है। डीओपी सर चाहते हैं कि मैं फ्रेम में रहूं, मुझे देखें और फिर अपनी लाइटिंग बनाएं, तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक ये चाहेंगे, मैं तब तक खड़ा रहूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। तो और जब तक शॉट लग रहा था तब तक कुछ यंग आर्टिस्ट थे जो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे राजपाल सर के साथ। तो उस 15-20 मिनट के पूरे टाइम में राजपाल सर ने उनके साथ एक छोटी सी वर्कशॉप कर ली एक्टिंग कि कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई आपका नॉन वर्बल लाइन है तो कैसे आपको अभिनय करना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज जस्ट सो हार्टनिंग टू वॉच। वी आर डीपली प्रिविलेज्ड टू हैव राजपाल यादव। एक्चुअली मैं सॉरी, मैं आपको आधा मिनट और लूंगा, जो इन्होंने गर्मी वाली बात कर दी। असल में क्या है, एक किस्सा अनुपम खेर साहब ने मुझे सुना दिया था कि वो गए, बोले कर्मा के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया था,
सेट पे पहुंचा तो एकदम 3-4 लोगों डांट दिया कि पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या इतनी गर्मी शूटिंग कर रहे हैं। तो बोले कि सब लोग दौड़ पड़े, कोई बोला कि खेर साहब ने खुद ही सुनाया था, बोले थोड़ी दूर पे जाके मैंने देखा कि एक आदमी कंबल अंबल ओढ़े और पूरी दाढ़ी बाड़ी बढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है। तो उसके पास में बोले कि अरे सर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उधर से जवाब आया कि गर्मी फील करोगे तो गर्मी लगती है भाई, नहीं तो गर्मी कहाँ लगती है। ये बच्चन साहब थे आखिरी रास्ता में। तो उसके बाद में अगर मुझे गर्मी लगने भी लगे तो मैं ये लाइनें याद कर लेता हूँ, मेरे अंदर ठंडक के तो मेहनत करते हुए जब गर्मी भी लगती है तो उसका फन भी अलग होता है, और आई थिंक वही सजा होती है। और अंदर की बात बताऊं, जीवन भर दुआ करो कि वो मजा भी बना रहे, वही सजा है, वही मजा है। थैंक यू सो मच राजपाल जी। और आपने फल की बात करी तो फल तो यहाँ पर बगल में बैठा ही है, तो ऐसे फल मिलता रहे। और कद्दू का पता नहीं, पर कटहल